Yes, I'm on a cycle. शायद एग्जैक्टली 12 दिन हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रह रहा हूँ आजकल. एंड ऑल्सो माई बाइक इज़ नॉट गेटिंग सर्विस्ड, और फिर पेपर अभी बाकी है उसका, तो थोड़ा टाइम लग रहा है. I will try to upload at least 3 videos in a week once my bike gets serviced and the papers are ready. तो अभी के लिए आप लोग ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, मैं जा रहा हूँ काकरविटा, दिस ओवर ब्रिज. लास्ट टाइम मैंने वेंट टू काकरविटा, मैं गया था नीचे से. अभी मैं ये शॉर्टकट ले रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड ओवर ब्रिज. इतना छोटा है ये कि you will reach नेपाल in just 2 minutes, not even 2 minutes. पहले आपको नीचे से जाना पड़ता था और फिर बाज़ार होके रेलवे ट्रैक क्रॉस करके कभी ट्रेन आके आपको वेट करना पड़ता था. लेकिन वो सब बिकॉज ऑफ दिस ओवर ब्रिज यू डोंट हैव टू फेस ऑल दोज प्रॉब्लम्स. तो अभी जा रहे हैं. The time is probably 10:30. I'm riding this cycle probably after a year. अभी थक गया. I'm just 500 meters away from my place और थक गया भाई. And also, what's up guys, this is Manjil and welcome to my channel. I hope everyone is doing great. I'm not doing great. बहुत थक गया. So I don't think I'll be able to turn my camera on border में, तो I'll try, but I don't think it's even legal to do that. तो आप सीधा देखोगे तो काकरविटा is on my right. भद्रपुर एयरपोर्ट यहाँ से 27 किलोमीटर्स, तमक लगभग 50, चिसापाने 900 किलोमीटर्स. तो शायद चिसापाने, अरे यार तो उतना बड़ा तो है नहीं काकरविटा, फिर भी. ऑन माई लेफ्ट दीज आर द होटल्स. सैनिक होटल, होटल भैरव, दीज आर बेसिकली द होटल्स वेयर यू कैन स्टे फॉर अ नाइट. शायद प्राइजेस भी उतना ज़्यादा नहीं है, 700-800 per room per night, I guess. I don't know how do they charge. This is the bazaar. It's a very small bazaar, but then it's a very important bazaar, I guess, because this is the place where you can find all the buses to each and every part of Nepal, like basically the main parts of Nepal, like Kathmandu, Damak, Dharan, Chitwan and all these. तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि I'll just go into each and every gully and show you guys what are the kinds of shops available over here.
तो सबसे ज़्यादा तो क्लोथिंग, द ट्रेडिशनल नेपाली ड्रेसेस, राशन स्टोर्स, वाइन शॉप्स और फिर होटल्स आर रियली इम्पोर्टेंट इन दिस प्लेस, क्योंकि कभी कभी टूरिस्ट रात को यहाँ आ जाते हैं तो फिर उनको एक रात तो स्टे करना ही पड़ेगा, क्योंकि रात को यहाँ से बस निकलती नहीं है। बस यहाँ से प्रॉब्ली 4-5 बजे निकलती है काठमांडू के लिए। Look at this one. This is really famous in Nepal. I'm not even sure the name of the bike, but this looks really cool. The ground clearance is also nice. लेकिन मेरे को नाम पता नहीं वो बाइक का। And there's no need to worry about your money exchange, because you'll find a lot of money exchange shop over here. There was 2 of the gullies. I'll go to another one over here on my left. I'm not going to buy anything, so I'm not going to enter the shop. It's क्योंकि टाइम पास जैसा हो सकता है, तो I don't want to irritate the shopkeepers, but this is how the place looks like. And I spoke to the locals. I was asking them where I can find some authentic Nepali food. मेरे को थाली खाना था, तो they were suggesting me a hotel named Darjeeling Hotel. So I'll probably go over there. So let me first find the hotel, and I'll see you guys over there. तो अभी मैं दार्जिलिंग होटल में हूँ। I've ordered थकाली खाना. It's Nepalese authentic food. तो here it comes. Okay. So okay, I've ordered mutton thakali khana, and this is how the plate looks like. This is gundruk's chutney. What is this? Karela, saag, spinach. This is beans, and here is the main thing, the main sabji, mutton, ghee. This is dal, dahi, papad, some salad, achar, another achar I guess, and there's a little chutney over here as well. Okay, ज़्यादा वेट नहीं कर सकता मैं. So less rice.
mutton. मैं गुंडरू घर में तो कभी नहीं खाता, लेकिन आज ट्राई कर लेते हैं। अरे भाई, this is very good. यो दिन मिल्छ चटनी अलि दिन अरू त भयो, यो चटनी चाहिँ टमाटो त्यो भयो। The food 9 out of 10. Like, this is super good. सबसे best. It's fresh, like it's warm. I know. मेरा मम्मी बोल रहे होंगे ये घर में तो कभी भी गुंडुक नहीं खाता था, यहाँ तो अच्छा से एक्स्ट्रा भी खा रहा है। दिस इज टू गुड मम्मा, यस्तो चाहिँ बनाउनु न, कस्तो मिठो छ। मिठै बनाउनुहुन्छ तपाईँ पनि, तर होटल भएर होला अलिक पैसा दिँदैछु नि त, त्यही भएर। तर साँच्चै मिठो छ। This is so good, so good. I'm not gonna waste this. I'm going to eat it. Like seriously, this is the first time I'm liking gundru. I can recommend, I think I'll recommend you guys this hotel. Okay, I didn't try this. Karela. It's okay-ish, but 9 out of 10. I think you guys should visit this place once. I don't know if there are some good hotels at Kakarvitta, but this is too good. Okay, dahi is there. Oh, why I'm sweating. कितना ज़्यादा खा लिया. I took some extras as well, but then I didn't show you guys, but I ate 3 plates. No, I can eat a lot. I have a very big appetite. अब घर जाते जाते मेरे को भूख लग जाएगा, तो घर में कुछ मिला तो वहाँ भी खा लेंगे, इसमें टेंशन का कुछ बात नहीं है, because I'm burning calories right now. So I'm going back. I probably spent around 2 to 3 hours. I'll try to upload more videos in future. I'll probably go to Sikkim and make a at least 4 to 5 days series. That is what I'm thinking. As soon as I get my bike's paper, that is the first place I'm visiting, Sikkim, and then I'll see another place as well. I'll first cover Northeast. So I
think this is it for today क्योंकि I am so full, I don't even feel like talking. यहाँ तक आया भाई, मैंने खाया नहीं, मैंने ठूसा था. So I'll see you guys in the next video. Please stay safe and अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. पसंद नहीं आया तब भी give me a chance, सब्सक्राइब कर देना. नेक्स्ट वीडियो में I'll improve myself again. सच में यार मेरा सांस फूल रहा है, इतना ज़्यादा खा लिया मैंने. तो प्लीज़ टेक केयर, stay safe. I'll see you guys again. Bye bye.